Hello students, welcome to my channel Rajindera Law Academy, and we are here joined for the daily Hindu news analysis. So this is our daily session for Hindu news analysis जिसमें हम important news articles को cover करने की कोशिश करेंगे which are important from our CLAT examination and other judiciary entrance examinations ओरिएंटेड जो एग्जाम्स हैं उनमें से जितने भी आपको न्यूज आर्टिकल आज के हिंदू के न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल दोज न्यूज. And before starting the class, I would like to inform you about our institute, which is Rajindera Law Academy. And we are both online based and offline based institutions, and we are providing classroom as well as online education and coaching for the CLAT entrance examination and other judicial examinations. So if anybody wants to join us, they can visit our offline center, which is at Ludhiana. And you can even visit to our website and know more about the online and offline courses which are being available at our institution. So let's move to the first news of the day. So first news, जैसे आपने देखा ही होगा that there was a full-fledged internet shutdown देखने को देखा आपने देखा होगा that एक Microsoft का update आया था. So there was an update from Microsoft जिसकी वजह से there was a worldwide chaos. Worldwide chaos क्यों हो गया था? Because there was all over the world there was server shutdowns हो गए थे. तो एक इंटरनेट ग्लिच की वजह से क्या है देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड chaos because पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर went through a server shutdown because of a technical default from the side of Microsoft. And क्या इसके बारे में explanation आया? They said there was a recent update by CrowdStrike. तो एक फर्म है CrowdStrike जिसने एक अपडेट लॉन्च किया बट दैट अपडेट वाज लिटिल बिट फॉल्टी जिसकी वजह से देयर वाज अ कंप्लीट सर्वर शटडाउन एंड पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एंड एयरलाइन सेक्टर एंड जितना भी डिजिटल मीडियम है उसमें क्या है देयर वाज अ कंप्लीट केओस. सो वी कैन सी दैट देयर वाज अ ब्लू स्क्रीन आ गया था पूरा ऑल ओवर द इंटरनेट देयर वाज ब्लू स्क्रीन जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन में एंड मेनी अदर डिजिटल कंपनीज उन सबको क्या है दे हैव सफर्ड अ सर्वर ग्लिच ड्यू टू दिस फॉल्टी अपडेट. तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है इससे यू हैव टू रिमेम्बर. तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू अ फॉल्टी अपडेट बाय some company there was a complete shutdown of the servers all over the world. So you should remember the name of the company. So what is the name of the firm? The name of the firm is CrowdStrike. So this is the information which you need to remember from this news, that what was the name of the firm. It was a cyber security firm. It is a Texas based firm. So Texas based firm थी. And it is a cyber security firm CrowdStrike जिसका नाम था जिसने एक अपडेट लॉन्च किया and that update was what faulty जिसकी वजह से there was a worldwide chaos triggered due to the server down हो गए थे and there was a complete blue screen. तो जिसको sometimes they also call blue screen of death. तो वो हो गया था. So this news is related to that only जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट डिले हो गई and अभी भी क्या है properly it's not functioning. So this is something you should remember. The next important news from today's newspaper is the resignation of the chairman of UPSC. So you should know who was the chairman of UPSC. So UPSC के chairman Dr. Manoj Soni, he has recently resigned, but उनका term नहीं complete हुआ, he has resigned.
citing some personal reasons that he has resigned almost 5 years before his tenure ends. So his tenure was going to end in 2029, but he has resigned now only, citing some personal reasons. So we should know something about UPSC also, and ये भी पता होना चाहिए that if the chairman of UPSC wants to resign, who should he address his resignation letter. तो ये भी याद रखना है, सिंपल डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि if UPSC का chairman is resigning, who should he address his resignation letter. So he would address his resignation letter to the President of India. So this is something you should know कि अगर यूपीएससी के चेयरमैन रिजाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेंगे. दे वुड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट. तो थोड़ा सा जानते हैं हम यूपीएससी के बारे में, बिकॉज यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में थोड़ा सा वी शुड नो. तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट एनी बॉडी, तो आपको क्या क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में. इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, or is it a statutory body, or is it a non-statutory body. So whenever you are preparing for any organization, सबसे पहले तो you should know कि वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का बॉडी है. तो यूपीएससी कैसा है. यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस यू शुड रिमेम्बर. एंड वेन एवर अ बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका कोई रेलिवेंट आर्टिकल भी होना चाहिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन्ड है. तो अगर आपको क्वेश्चन आए यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में अवेलेबल हैं, तो यू शुड नो दैट आर्टिकल 315 to 323 talks about the various provisions related to the UPSC. So this is something very very important. तो आपने ये तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए. तो आपने याद रखना है कि what are the articles related to UPSC. So UPSC is mentioned in article number 315 to 323 of the Indian Constitution. So this is very important for you. So basically UPSC, अभी हमारा फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया that UPSC is what, it is a constitutional body, right. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. कोई भी बॉडी पढ़ोगे उसके बारे में सेकंड चीज क्या पता होनी चाहिए, उसकी मेंबरशिप, तो कि उसमें कितने लोग हैं. तो याद रखना है यूपीएससी में देयर इज वन चेयरमैन एंड देयर वुड बी सम नंबर ऑफ मेंबर्स. अब कितने मेंबर्स हैं ये भी पता होना चाहिए. कोई भी आप बॉडी पढ़ रहे हो तो उसमें कितनी मेंबरशिप है, यू शुड नो. सो देयर इज वन चेयरमैन एंड एनी सच नंबर as determined by the President of India. So this is very very important that in the Constitution there is no fixed number mentioned कि UPSC में कितने membership होना चाहिए, how many members should be there. Just a second. So this is, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए that Constitution say that UPSC में 10 members हो, UPSC में 8 members हो, 7 हो, so these all options are wrong because the Constitution is not deciding the कितना members होगा, it is putting the condition that there can be any number of members as decided by whom, decided by the President of India. तो ये आपने याद रखना है कि कितने members होंगे उतने ही होंगे जितने President of India decide करेंगे. So this is important. So membership is not mentioned in the Constitution, ये याद रखना है. Then who will appoint them? Who will appoint the chairman and who will appoint the members? तो ये दोनों चीजें भी याद रखनी है. The appointment is done by the President of India. So President of India ही decide करेंगे कि कितनी membership होगी and appointment भी President of India के द्वारा ही होगा. UPSC एक constitutional body है. ये तीन चीजें पढ़ी हमने. And last, so once you are formed the member, आप कितने साल continue कर सकते हो. You have a membership either for 6 years or until the age of 65, whichever is earlier. So maximum tenure कितना हो सकता है, या तो आपका tenure 6 years का होगा, otherwise until you achieve the age of 65 years.
So कितना tenure है? 6 years or 65 years, whichever is earlier, right? For example, somebody is of 62 years age एंड वो यूपीएससी के चेयरमैन बन जाते हैं, तो उनको कब रिजाइन करना पड़ेगा? 65 years में. इन दिस केस उनका टेन्योर 6 years वाला तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 65 तो आ गया, तो दे शुड व्हाट, उनको रिजाइन करना होगा, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा बेसिकली, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो व्हाट इज द टेन्योर? टेन्योर इज 6 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर. सो आई होप इट इज क्लियर. सो व्हाट एल्स? And what about the reappointment? So you have been appointed as the member of UPSC. So can you be reappointed again as the member of UPSC? This is also a question. So ये समझने वाला point है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए. If you are appointed as the chairman of UPSC, if you are what? If you are the chairman of UPSC, you are not eligible for reappointment. So you are not eligible for reappointment to that office. You cannot again become the chairman of UPSC. Is it clear? And what if you are the member of UPSC? If you are member of the UPSC, you are not eligible for the membership post. आप दोबारा member नहीं बन सकते, but you can apply for what? Chairman. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो आपने याद रखना है. That if you are the chairman of UPSC, you cannot be reappointed as the chairman of UPSC again. So the constitution directly bars that you are ineligible. But if you are the member of UPSC, then you are what, debarred from again the becoming the member of UPSC, but you can apply for the higher rank, which is what, chairman of the UPSC. So I hope this is clear. एंड रेजिग्नेशन वाला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, दैट इफ a member of UPSC or chairman of UPSC wants to resign, they have to address their resignation to the president of India. तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा सम अप करें. तो यूपीएससी इज व्हाट हमने डिस्कस किया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी mentioned under article 315 to 323 articles. Then we discussed there would be one chairman and any number of members as decided by president. Then we discussed what? Then we discussed the, then what this we क्या discuss किया? Then we discussed the tenure. Tenure क्या discuss किया? That it is either 6 years or 65 years, whichever is earlier, right? Then we also discussed that if he wants to resign, if the chairman or the member wants to resign, they will resign to whom? President. And they are appointed by whom? Appointment भी कौन कर रहा है? Appointment is also by the President of India. So इतने points हमने discuss करे हैं about the what? The UPSC. And अभी current chairman कौन थे? Who was the current chairman जिन्होंने resign किया? उनका नाम भी पता होना चाहिए. Sometimes directly question कैसे आएगा? That recently Manoj Soni was in news for resignation from his post. He was the chairman of which of the following? They can give you 4 options that he was the chairman of what? Option A, Election Commission. Option B, he was the chairman of chief. He was the chief of what this Chief Information Commissioner. He was what? He was the chairman of. He was the director of CBI. So ऐसे आपको 4 options आ सकते हैं. Last पे he was the chairman of UPSC. So what is the answer? Manoj Sinha was the chairman of UPSC who recently resigned. Right? So let's move to the next news. So next news is related to Bangladesh. So Bangladesh has been in news from last few days because of the ongoing student protest. So students are protesting in Bangladesh.
तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है इन बांग्लादेश. व्हाई? दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द reservation policy. So they are protesting against the reservation policy. जो एक कोटा डिसाइड हुआ है 30% का. So students are what? Protesting against those reservation policies. And वही news आया that there is a complete unrest in Bangladesh and more than 100 people, around 105 people have died till date, and there is a lot of what violent protest ongoing in Bangladesh. तो आपको सिंपली क्वेश्चन कैसे आ सकता है फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स? तो सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है दैट which of the following country has been in news in the recent past due to violent student protest which was against the reservation quota bill which was being introduced by that state? So we should remember that which country was it? It was Bangladesh. So right. So let's move to the next news article which is related to the EPF. So what is the news? EPFO's system are dysfunctional and crash prone. So the IT system जो है EPFO का, तो न्यूज क्या है दैट EPFO का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, that is very very poor and that has been dysfunctional from last 2.5 years, and it is not crash, it is what, it is crash prone, right? तो क्या है, बार बार उनकी वेबसाइट और उनके सर्वर्स क्रैश कर रहे हैं. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली ऑफ ईपीएफओ. सो व्हाट इज दिस ईपीएफओ? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ईपीएफओ क्या है, राइट? सबसे पहले यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ ईपीएफओ. So what is the full form of EPFO? So EPFO is what? Employees Provident Fund Organization. Note down, simple, sometimes one liner question आ सकते हैं कि what was the full form of, what is the full form of EPFO? So it is Employees Provident Fund Organization. So it is what? It is Employees प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में बात हो रही है. इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर. सो लेट्स अंडरस्टैंड सम फ्यू थिंग्स अबाउट ईपीएफओ. तो अभी मैंने जब यूपीएससी पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपने सोचना ये कौन सा बॉडी है, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टेचुटरी बॉडी है. तो वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे ईपीएफओ के बारे में करना है अपने दिमाग से, दैट इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? So no, it is not a constitutional body. Is it a statutory body? So yes, it is a statutory body. So if it is a statutory body, there should be a law जिसके अंडर उसको बनाया गया है. So what is the law of EPF जिसके अंडर EPFO बना है? And what is the law? It is the Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952. इसके अंडर we have a statutory body. Just a second. So what we have a statutory body under the Act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952. And what is the work of this EPFO? So what is the work of EPFO? It was established to provide social security to the workers in the working in India. तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम क्या था, EPFO, which was formed under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952. So it is basically what? It is a statutory body.
So what else we should know that अब इसका management, that इसको manage कौन कर रहा है? So it is being managed by a tripartite board. So it is managed by a tripartite board. So what do you mean by tripartite board? So tri means three. So there are three parties to the board. कौन कौन सी? तो बोर्ड का नाम क्या है? सबसे पहले जो ईपीएफओ को मैनेज कर रहा है, सो ईपीएफओ इज बीइंग गवर्न्ड बाय अ बोर्ड विच इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. तो बोर्ड का नाम क्या है? इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. एंड इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी है? अभी हमने पढ़ा, इट इज व्हाट? इट इज थ्री पार्टाइट इन नेचर. So it is what? It is tripartite in nature. So means three parties are involved. कौन-कौन से three parties हैं? So there are representatives from central government in the board, and there are representatives from state governments in the board, and at the last there are representatives from the employees side as well. तो तीन पार्टीज हैं. कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव. सो दे ऑल फाइंड द रिप्रेजेंटेशन इन दिस बोर्ड which is known as the central board of trustees, and this board is what managing the EPFO. So it is being managed by a board which is known as Central Board of Trustees. तो अभी हमें मैनेजमेंट भी समझ आ गया. Then it is for providing social security to the workers. So it is for providing what? Social security to the workers. And how it is providing social security to the workers? It is providing social security to the workers by implementing three schemes. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. तो कौन कौन सी स्कीम? तो देयर इज वन ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो 1952 में आया. देन देयर इज अ पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, एंड देन देयर इज अ इंश्योरेंस स्कीम जो 1976 में आया. इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग गवर्न्ड बाय व्हाट? इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय ईपीएफ. तो कौन कौन सा? वन, वी हैव व्हाट? वी हैव पेंशन स्कीम. देन वी हैव व्हाट? वी हैव प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एंड लास्ट वी हैव एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम. So through these three, by providing insurance to the employees, by providing a provident fund, and by providing pension after their tenure is over to the employees, so they are providing what? Social security to the workers. और ध्यान रखना है कौन से वर्कर्स? इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो जितना भी फॉर्मल एम्प्लॉय है उसकी बात करें तो ईपीएफओ इज व्हाट? ईपीएफओ इज प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग थ्री स्कीम्स. तो ये आपने याद रखना है. सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर अबाउट द ईपीएफओ. So let's move to the next news of the day, and it is related to what? It is related to the electoral bonds. So जैसे आपने देखा होगा previously be that electoral bonds have been declared unconstitutional by Supreme Court. तो इनको unconstitutional तो declare कर ही दिया, लेकिन still the hearings are going on because different pleas are being filed in Supreme Court. तो cases अभी चल रहे हैं. So let's थोड़ा सा जानते हैं about electoral bonds. So what are electoral bonds? So electoral bonds basically are a way by which anyone can donate money to the political parties. So if any person wants to make donation to a political party, they can make a donation via electoral bonds, and this donations would be what? Anonymous. So you can anonymously, without
uh, without highlighting your identity anonymously, you can donate to a political party. So electoral bond was a way to do that. एंड दिस कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो? तो नो, देयर इज लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शन कि एनी पॉलिटिकल पार्टी जिसको डोनेशन चाहिए उसको दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. तो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डोनेट देम. तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए. देखिए, वैसे इसको इतना डिटेल में अब जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल. तो अभी क्या है, बट फिर भी लेट्स थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो क्या सिस्टम था कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट कर सकते थे और उसको कम से कम 1% वोट तो आए होने चाहिए थे लास्ट जनरल इलेक्शन में और टू द असेंबली इलेक्शन. जितना भी उसको क्या है, कम से कम कितना है, 1% वोट तो उसको मिले हों लास्ट जनरल इलेक्शन जिसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया, बीट असेंबली इलेक्शन, बीट वॉट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा. तो क्या है, कम से कम कितने वोट्स हो, 1% ऑफ द वोट्स होल्ड. तो उस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन कर सकते थे थ्रू व्हाट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स. एंड एनीवन कुड डोनेट. And how these were available? So these were available from the various branches of State Bank of India. तो अगर किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय करने थे तो वो कहाँ से कर सकते थे? From any branch of SBI, and they were available in the multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh to 1 crore. तो 10,000, 1,000 से लेके 1 करोड़ के मल्टीपल्स में अवेलेबल थे, राइट? So you can what, buy it from any authorized branch of state bank, and then the donor जिसने भी ये buy करे, that donor can give this to the political party of their choice, and that political party then would have to encash, redeem it within 15 days of receiving, and they can use it for their own electoral expenses. So this was a way of donating to the political parties, but because of anonymity, there were certain issues जिसकी वजह से Supreme Court of India has declared it what, unconstitutional. So now this scheme is not available anymore. So let's move to the next news, and this is related to the, this is from Uttarakhand. Uttarakhand se there is a news that interfaith couple get protection under UCC. So recently UCC bill pass किया है, कौन सी स्टेट ने? उत्तराखंड ने. And what is UCC? UCC is Uniform Civil Code. UCC is Uniform Civil Code. तो जो उसके अंडर अभी क्या है, इंटरफेथ कपल, तो जो लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हैं, इंटरफेथ मीन्स दैट दे बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजन. So the guy is Hindu and the female is, I think, Muslim. So they were living in a live-in relationship, but the family of the both were not okay with the relationship, and so they were getting protection under the new law, which is what, Uniform Civil Code. So Uttarakhand is the state which has passed Uniform Civil Code in India. तो अभी क्या है, government is trying to make UCC enforceable for all over India. तो UCC को enforceable करने की कोशिश की जा रही है all over India. So what is basically UCC, हमें यही समझना. So UCC refers to what? सबसे पहले full form, Uniform Civil Code. तो uniform मतलब एक जैसा. So there should be a uniform civil code, similar civil code. So in your civil life, there should be what, similar laws. So there should be a single law for the entire country in your civil life. तो civil life के जो aspects हैं उनको govern करने के लिए we should have what, a single law.
But right now, what is the situation? Right now, we have what every community is having their own laws according to their religious practices. So we are what trying to what build a uniform civil code for the entire country, which will govern the personal matter of the citizens. So personal matters में कैसा कैसा आएगा, like the marriage, like the divorce, inheritance, adoption. तो भी क्या है, there are multiple laws which are governing these civil aspects. For example, for marriage का example लेते हैं. So if you are a Hindu and you are going to marriage, तो आपका marriage like what किस में register होगा? Under Hindu Marriage Act. If you are a Sikh, it would be registered under Anand Marriage Act. If you are doing a intercaste, interreligion marriage, तो वो क्या है? Special Marriage Act में register होगा. तो आप देख सकते हो there are multiple laws just for registration of marriage. So what we are trying to do through UCC, we are trying to have a uniform civil code, that there should be a single law for the entire country which should govern all the civil aspects, the personal matters of the people. तो इससे क्या होगा, there would be क्या है, जो अभी फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉज हैं, लाइक उसके लिए क्या है, उसको रिप्लेस किया जाएगा थ्रू अ सिंगल लॉ. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करके वी वांट टू फोकस ऑन अ सिंगल सिविल लॉ दैट विल गवर्न द पर्सनल मैटर्स ऑफ द सिटीजंस. तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है, बट अभी दिस इज नॉट फ्रेम्ड, अभी इसका कोई एक्ट फ्रेम नहीं हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका जिक्र है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, it is mentioned in the constitution under article 44. So article 44 of the constitution says that the state shall endeavor, that state shall try to secure a uniform civil code. तो सर क्या है, जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है to secure a uniform civil code for the citizens throughout the country. बट अभी क्या है, इस पे पूरी सहमति नहीं बन रही है, एंड देयर इज नो सिविल सिंगल सिविल कोड राइट नाउ. बट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग एंड गवर्नमेंट इज होपिंग दैट दे कैन फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल कंट्री. तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने स्टेट के लिए यूसीसी फ्रेम कर लिया है. तो कौन सी स्टेट है, एक तो अभी मैंने बताया उत्तराखंड. तो रिसेंटली उत्तराखंड हैज फ्रेम्ड a single civil code governing all the aspects of its citizens. तो उत्तराखंड के residents के लिए they have framed a UCC. and other than उत्तराखंड, इंडिया में और कौन सा स्टेट है जहाँ पे एक सिंगल कोड है? सो another was गोवा, राइट. तो दो ही स्टेट्स ऐसे हैं जो आपने याद रखना है. बट आर्टिकल 44 क्या कहता है, देयर शुड बी अ सिंगल सिविल कोड फॉर थ्रू आउट द कंट्री फॉर ऑल द सिटीजन्स. तो यूसीसी का आर्टिकल याद रखना है, कितना है, आर्टिकल 44. देन ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली कौन सी स्टेट ने अपना स्टेट स्पेसिफिक जो है यूसीसी बनाया है, सो दैट इज उत्तराखंड. एंड इफ दे आस्क कि टोटल कितना स्टेट्स हैं जिसमें यूसीसी है, तो उत्तराखंड भी है और गोवा भी है. सो देयर आर 2 स्टेट. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. So these were the important news articles from today's newspaper. I hope all the points are clear. If anybody has any doubt, feel free to ask me in the comment section. So at the end of every class, we are gonna have question of the day. And I expect everyone who is watching my class that you should try to be participative in the class, and you should try to answer the question of the day in the comment section. इसका आंसर we will discuss tomorrow. The question of the day is, who was the first chairman of UPSC? तो यूपीएससी के सबसे पहले चेयरमैन का नाम क्या था? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डे विच यू शुड आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
So I hope the class में जितने भी points discuss करे हैं are clear to everyone. And if anybody has any doubt, feel free to ask in the comment section. And for any guidance related to the judicial exams, feel free to visit our website and our channel Rajindera Law Academy. We are providing mentorship guidance as well as complete classroom and offline and online coaching for the all judicial entrance examination, be it state specific or be it CLAT. So feel free to visit our site. So I hope every point has been made clear in the class. So let's wind up the today's session. Okay, students, thank you so much. Have a great day. Study well.